Good evening, sir. Am I audible? Sir, you are not audible. Himanshu, sir. I cannot hear. Hello. Yes, yes, sir. Now we are audible. Oh, thanks. Yeah. And is the like PowerPoint visible? Yeah, it's there. Okay. Okay. So we are going to wait now for 12 minutes more. Yeah, yeah. Okay. Thank you, sir. कुछ कुछ टेम्पलेट बनाने का कोशिश किए अगर मौका मिला इसमें तो पॉसिबल नहीं है कभी ऑफलाइन हुआ तो वो टेम्पलेट भी शेयर कर देंगे हाँ, बिल्कुल। हाँ लेसन प्लान का टेम्पलेट
Good afternoon, all the participants. Rama ma'am, are you ready? Yes, I'm ready, sir. Himanshu sir, you are not audible, sir. Hello. Yes, sir, now audible. Okay, okay. So, Yes, सिंपल मैम थोड़ा बाहर भी आइए. okay. Yes, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon. So, welcome all the participants. On behalf of Aryavardha Saudya School Complex, I welcome you all once again. And today here with us is Rama Chakraborty ma'am, an excellent resource person. And our topic is today the implementing the NCF, reflection and improvisation, a very important topic in the wake of the implementation of NCF for the NEP for this for the new module. So I request Rama ma'am to kindly start the session. Thank you. Thank you, Himanshu sir. Thank you, Simple ma'am. And with the blessings of CB sir and Radhika ma'am, I do not know whether they are there, but with their blessing, I'll start the session. Thank you, Aryavat Sahudaya, for giving me an opportunity to share this topic with all my colleagues, my uh, dear teachers who are also working in the same field. So I'm feeling myself to be privileged to get an opportunity to discuss with you all these things which are important, which are going to be very, very important in the coming session. With NEP 2020, we have started dreaming about a new India, a new generation of students who will be learning in playway method, those who will be learning happily, those who will learn to learn themselves, and they will learn on experiential based learning. They will learn through hands on activities, they will learn according to competence, they will learn at their own speed and pace, and happiness will be there. ये जो सपना है, ये सपना तो देखे है सब लोग मिलके. And all these philosophical thoughts, they are actually together, उसका summary बना के एक framework बनाया गया जिसको बोला जा रहा है NCF. अब इसमें एक बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता रहता है कि NCF 2023, ये NCF 2022. कोई जगह में बोलता है कि NCF 2022 एंड कहीं कहीं आप नेट पे ही सर्च करिएगा NCF 2023. बात क्या है इसमें? नाउ दिस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क which is introduced, okay, the first complete mandate was introduced by Sri Dharmendra Pradhan, the education minister. That was done first time on April 29, 2022. After that, that was revised, and in 2023, we have got the National Curriculum Framework for Secondary Education. पहला जो था वो NCF ECCE हुआ for foundation learners. Then we in 2023 in August we have got another framework for secondary education. Now let us know a little bit about this. Introduction of NCF 2023 is a big move towards changing our entire education system, the way we perceive it traditionally. जैसे हम लोग पढ़ाई किए, जैसे हम लोग के शायद पापा मम्मी पढ़ाई किए, उससे थोड़ा सा हट के, and that is based on the latest researches, and to make it
more holistic, flexible, adaptable to the needs of the students. जो हम लोग बीएड के समय से पढ़ के आए हैं ना, learner centric, student centric. So we are shifting. That's a big shift. हम लोग देखते थे सेज ऑन द स्टेज, ठीक है। हम लोग के स्कूल के जमाना में हम लोग के पापा मम्मी के जमाना में, मतलब देयर इज अ प्लेटफॉर्म, उसके ऊपर चेयर टेबल, उसके ऊपर टीचर है, उनके पीछे ब्लैक बोर्ड है, वो कुछ बोलते हैं और सामने जो बैठे हुए हैं वो चुपचाप उसको सुनते जाते हैं। तो आज का जो चीज है वो नहीं है। अधिकतर स्कूल में तो टीचर के लिए चेयर भी नहीं रखा जाता है, बिकॉज they are expected to go on a round inside the class. घूमते रहते हैं, बच्चे क्या कर रहा है, कहाँ गलती हुआ है, कहाँ सुधारने का जरूरत है, कहाँ इंडिविजुअल अटेंशन की जरूरत है, ये सब देखने को पड़ता है। सो नाउ वी आर वी आर गाइड बाय द साइड। मे बी उससे भी अच्छा बोले कि वी आर एक्चुअली मेंडिंग इन द मिडल, वो भी बोल सकते हैं। तो ये जो एनसीएफ है, एनसीएफ 2023, दिस इज एक्चुअली द फिफ्थ एनसीएफ, ठीक। एंड इसके जो स्टीयरिंग कमिटी का हेड थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ये हम लोग थोड़ा सा याद रखेंगे, जनरल नॉलेज भी है, याद रखना भी है कि फिफ्थ एनसीएफ जो एनसीएफ 2022 या 2023 बोला जाता है उसको, उनकी स्टीयरिंग कमिटी के हेड थे डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। नाउ ये जो एनसीएफ, इसके ये बहुत सारे स्टेज में इसका अलग अलग फ्रेमवर्क आने वाला है। दो तो आ चुका है और दो आने वाला है, लेकिन इसके बारे में ये थोड़ा बहुत जो और जानकारी लेना है कि प्रीवियस एनसीएफ कब कब आया था। 1975, then 1988, then 2000, then 2005, and now this is NCF SE, that is for secondary education 2023. Okay, and that is totally based on the principles and the philosophy of NEP 2020. इसकी फिलोसॉफी को एक्चुअली जमीन पर उतारने के लिए, प्रैक्टिकली उसके ऊपर काम करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्चुअली एनसीएफ बनाया गया है, एनसीएफ 2022। ओके, सो if we talk about this NCF, this is organized into 5 parts. What are the 5 parts? Part A talks about the aims of school education. Part B, it talks about the important cross-cutting themes, because कोई भी subject, कोई भी theme हम लोग एक solid boundary से उसको limit नहीं कर सकते हैं. There are areas where there will be overlapping, and that overlapping and that cross connection is actually healthy. बिकॉज हम लोग के चारों तरफ की जो दुनिया, जितना थ्योरीज है, जितना नॉलेज है, जितना स्किल्स है, उसको हम लोग फ्रैगमेंटेड वे में उसका आत्मसात करना एक्चुअली असंभव है। सो क्रॉस कटिंग थीम्स आर देयर, देन देयर आर स्कूल सब्जेक्ट्स, क्या क्या सब्जेक्ट्स होना चाहिए, कैसे कैसे उसका ग्रुपिंग करना चाहिए, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देन स्कूल कल्चर, what should be the school culture and process, and the part E is called the ecosystem of schooling. ये 5 पार्ट में NCF 2023 को ऑर्गेनाइज किया गया है। Now we must know the fundamental principles of NCF, जिसको बोला जाता है NCF का पिलर। ये जानना जरूरत है, बिकॉज ये अगर नहीं जानेंगे तो हम लोग NCF के सोल को नहीं जानेंगे। What are the fundamental principles? There are actually 5 principles जिसको ध्यान में रख के हम लोग को सब कुछ करना है स्कूल में। स्कूल में कुछ भी एक्टिविटी कराना है, स्कूल में एक पेडागोजी कैसे होगा, स्कूल में क्लास का ओरिएंटेशन या ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, ये सारा कुछ, इवन टाइम टेबल, जो भी छोटा छोटा टिडबिट्स है, वी आर गोइंग टू कीप दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ये 5 प्रिंसिपल जिसको 5 पिलर कहा जाता है, उसको ध्यान में रख के हम लोग को पूरा काम करना है। अगर आज हम लोग इधर इकट्ठे हुए हैं इम्प्लीमेंटेशन के बारे में जानने के लिए, तब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जानना बहुत जरूरी है। व्हाट आर दे? नंबर 1,
हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। बच्चा का डेवलपमेंट कैसे होगा? बच्चा सिर्फ एक बॉडी नहीं है, बच्चा सिर्फ एक माइंड नहीं है, उससे भी परे है। कोई भी इंसान, अगर हम लोग इंडियन फिलोसॉफी देखें, हम लोग की उपनिषद को भी देखें, तो उसमें बोला जाता है इंसान सिर्फ एक बॉडी नहीं है, सिर्फ एक माइंड भी नहीं है, सिर्फ बुद्धि भी नहीं है, उससे भी परे कुछ है। हम लोग सब मिला के कुछ अलग ही चीज है। ये जो बॉडी माइंड का कॉम्प्लेक्स, इसके ऊपर बेस करके होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए। तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ children or our learners, we will talk about their physical development, their emotional development, their social development, their ethical development, the development of their mind, the development of their cognitive skills। ये सारा कुछ holistic development में आएगा। So whatever we do in the school, that should be based on this holistic development. We have to keep it in our mind. Then there is inclusivity. All the learners will be inclusive in the system। जब इंक्लूसिविटी के बारे में बोलते हैं तब दो चीज आता है, जो है इक्वालिटी एंड इक्विटी। उसके बारे में हम लोग बाद में थोड़े थोड़े बाद में चर्चा करेंगे। देन इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। इंटरडिसिप्लिन मीन्स जब साइंस के बारे में बोलते हैं तब लैंग्वेज के बारे में बोलना नहीं है, ये सोचना गलत है। A science teacher is also a language teacher. If a language teacher's need is there, then he or she will learn something about science. And they can take the help of the art teacher. Mathematics is not something alien for the other subjects. So there will be interdisciplinary learning, because the borderline or the boundary line of different subjects or different disciplines are actually very blurred. Then the fourth one is very, very important, competency based education. When we are talking about the learner centric education, where we will take care of the speed, of the competency, of the skill developed in the learners, of the learning outcome of the learners. We will take care whether the learning outcome has been achieved and attained by all the students of my class। मेरे क्लास के पांच बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अप्रैल के महीना में हमने करिकुलम लिखने के टाइम लिखा था कि 2 चैप्टर मुझे खत्म कराना है, और क्लास का 30 बच्चा समझ नहीं पाए लेकिन 2 चैप्टर मुझे खत्म कराना है, बिकॉज सिलेबस खत्म करना जरूरी है। ये चीज नहीं है। When we are talking about competency based education, we have to take care of each and every child of the class। Then यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, बहुत बार हम लोग आर्यवर्त सहोदय में या तो अलग अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोग यूज ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बोले हैं। ऑनलाइन क्लास, ऑफलाइन क्लास, फ्लिप क्लासरूम, ब्लेंडेड लर्निंग। जब जैसा जरूरत है, बच्चा का हेल्प के लिए, बच्चे की नीड को टेक केयर करते हुए हम लोग को यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी मतलब नजरअंदाज नहीं करना है, उसके बारे में भी सोचना है। तो ये जो 5 पिलर, उसके बारे में और थोड़ा सा चर्चा करते हैं। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है? इट एम्फसाइजेस द नीड फॉर अ holistic approach to education that promotes the overall development of students। I have already discussed this, and this includes developing the students' physical, emotional, social and cognitive skills। बच्चा का शारीरिक विकास जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है वो इमोशनली कितना साउंड है, वो सोशली कितना एक्टिव है, कितना अच्छा सोशल बीइंग है, कितना पॉजिटिव सोशल बीइंग है, एंड व्हाट इज his or her cognitive skills। These all things are important when we are talking about the holistic development। The next thing I was talking about was inclusivity, a learning environment that promotes the full personal, academic, and professional development of all the learners, irrespective of ability, race, class, color, gender, disability, sexual preference, learning style, and language।
क्लास में सारे बच्चे को लेसन सिमिलरली जाना चाहिए, वो लोग का कॉम्पिटेंसी लेवल एक ही तरह का होना चाहिए, नहीं तो वी हैव टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा हेल्प व्हेन दे नीड. And the environment will be such that it promotes the full support for each and every learner irrespective of these criteria. कौन बच्चा वीक बच्चा है, कौन बच्चा स्ट्रांग बच्चा है, कौन किस इकोनॉमिक स्ट्रेटा से बिलोंग करते हैं, किसका धर्म क्या है, किसका जाति क्या है, कोई किसी का डिसेबिलिटी है कि नहीं, ये हम लोग नहीं देखेंगे. एनवायरनमेंट ऐसा होगा, सब टीचर की दृष्टि से, स्कूल की दृष्टि से इक्वल, and if required, we are going to give them extra help to bring them together to the same platform. That is called inclusivity. And that is why I was telling that there is a difference between equality and equity. Equality matlab samadrishti se dekhna. But when we talk about equality, we shouldn't forget about equity, because equity is telling that you bring them to the same platform, and whatever help is needed, you give it according to individual need and preference. And the next sentence is a beautiful sentence, and if actually we can make it possible, there will be nothing better than that. So it's talking about in disability. What the sentence tells is disability is a social responsibility. तो क्लास में अगर कोई बच्चा ठीक से चल नहीं पाते हैं या ठीक से देख नहीं पाते हैं, उसको मौकरी करना तो दूर की बात है. वी विल टेक हिम और हर एज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी. हिज ग्रोथ, हिज डेवलपमेंट इज ऑल्सो equally important or more important, because when we are socially responsible, we will take more care of them, so that they can also be brought to the same platform. Interdisciplinary learning, we have already discussed a little bit that the NCF 2023 propounds the integration of subjects through interdisciplinary learning. And by encouraging students to explore connections between different disciplines, the framework aims to foster a comprehensive understanding of the world. It's in a totality. The world is not in fragments, and we have to look at it in that perspective, from that perspective, rather. Okay. Now, the next thing is competency-based education. In a previous session, I have spoken a lot about this competency-based education, where competency means the knowledge, behaviors, attitudes, and even skills that actually gives us the ability to do something successfully or efficiently. इसको हम लोग गुण कह सकते हैं, इसको हम लोग योग्यता बोल सकते हैं. So competency means all these things, all this knowledge, behavior, attitude, and skills which make us able to do something, to lead our life successfully, efficiently, productively. So the ability to make anything properly is a competency. And when we talk about skill, a competency can be made up of a set of skills. Skills are learned and applied abilities that use one's knowledge effectively in execution or performance. When we talk about 21st century skills, we know what are the skills which are very, very important for our learners, or for the successful life. It is important for every individual. And what are those skills? Those skills are creative skills, communication skills, then critical thinking skills, then problem solving skills. All these skills are important. And when we are talking about competency based education, to develop the competency, we have to focus on these skills. क्लास में जब हम लोग इस बार लेसन प्लानिंग लिखेंगे, तो जब
हम लोग अलग अलग एक्टिविटी से बच्चों को एंगेज करने वाले हैं, बिकॉज नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट competency based and activity based education, we cannot think about one unidirectional lecture method. We have to think about the different activities through which we are going to engage our children. और जब ये सोचेंगे तो अलग अलग स्किल डेवलपमेंट के लिए हम लोग एक्टिविटी को डिजाइन करेंगे। ऐसा ऐसा एक्टिविटी होगा कि अलग अलग competency, अलग अलग skill set will be nurtured in the students. Next comes the use of technology. We have already discussed about the use of technology, and the NCF emphasizes the importance of it in education and guidance. How to integrate technology? We have to be very, like, we should think about these different types of activities where the technology can be applied, can be blended into our teaching learning process. It could include using digital resources for teaching and learning, kabhi online class, kabhi videographed or recorded lecture, kabhi flipped classroom, kabhi blended teaching. ये सारा कुछ अप्लाई करके we will use technology for the betterment, for the improvement of our teaching learning process and our pedagogy. And when we do that, then we will achieve collaboration, higher engagement of the students, personalized learning, distance learning, and improved teaching productivity. That will be the result of the use of technology in our teaching learning process. Now, let us think about the objectives of NCF. Dear teachers, dear educators, I am telling, when we are designing our curriculum, when we are writing our lesson plans now for this coming session, we have to take care of all these. What are the objectives of NCF? Let us see. That is development of curriculum, development of pedagogy, then development proper of a proper assessment system, and development of the teachers so that we can take care of our learners properly. ये सारा चीज इंपॉर्टेंट है और ये सारा चीज के लिए एनसीएफ बात करते हैं। करिकुलम को डेवलप करते समय क्या क्या हम लोग के दिमाग में रखना पड़ेगा, ऐसे ही पेडागोजी को भी डेवलप करने के टाइम क्या क्या दिमाग में रखना पड़ेगा, कैसे असेसमेंट होगा, असेसमेंट का बेस क्या होगा, असेसमेंट से हम लोग क्या करना चाहेंगे, और असेसमेंट क्या एक ही होना है या डिफरेंट फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लर्नर्स, वो भी हम लोग को सोचना पड़ेगा और तैयार करना पड़ेगा। करिकुलम गाइडलाइंस क्या है? करिकुलम गाइडलाइंस के बारे में ये बोला जा रहा है कि द पर्पस ऑफ दिस एनसीएफ इज टू effect positive transformation in Indian school curriculum. Because why? The world is undergoing rapid changes. Knowledge landscape में सिर्फ नहीं, सब कुछ में new researches, new findings, new philosophy, all these things are going to make us think in a new way, in an alternative way. So workforce must have deep human capacities now. They must have multidisciplinary capacity. आज के टीचर अगर बोले कि ऑनलाइन जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, आई कैन नॉट हैंडल नेट रिसोर्सेज, तो उसके लिए वो सही नहीं होगा। Because the world is changing, so we, the teachers, also have to change ourselves. नया नया चीज हम लोग को सीखना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करके अपने आप को, अपना सिस्टम को इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। ये चीज भूल जाइए कभी कोई नोट का कॉपी तैयार किए थे और वो नोट कॉपी 20 साल से बार बार यूज करके वो एकदम फट गया है, वो एकदम मतलब उसका रंग उड़ गया है, लेकिन द सेम नोट कॉपी we are taking while going to our classes and then reading out notes to the children. वो जमाना गया।
We have to think differently. We have to work differently. And there comes the improvisation and reflection. क्या करना होगा? The curriculum must be responsive to the glorious unity in diversity of India. जब इंडिया के बारे में सोचते हैं, हम लोग के श्रेष्ठ भारत के बारे में सोचते हैं, तो इसमें ढेर सारा भाषा, धर्म, जाति, कल्चर, सबका एक अनोखा मिक्सचर है। तो ये जो ग्लोरियस यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको भी हम लोग को ध्यान में रखना है। द करिकुलम शुड बी सो डेवलप्ड दैट इट स्पीक्स अबाउट दिस यूनिटी इन डाइवर्सिटी. The curriculum will refer to the overall goals, plans, practices. It will stress on holistic and integrated changes, and the term curricular area will be used as a broader category. Now, what the NCF is telling about languages, इसके बारे में बहुत चर्चा होता है. शायद लोगों का कंफ्यूजन भी है कि एक्चुअली लैंग्वेज में क्या करना है. जब हम लोग लैंग्वेज के बारे में बोलते हैं, देयर आर 3 लैंग्वेजेस इन द स्कूल करिकुलम व्हिच आर डिनोटेड एज R1, R2 एंड R3 इन दिस NCF. छोटे क्लास में, फाउंडेशनल लेवल में या प्रिपरेटरी लेवल में, तब आपको एक्चुअली 2 ही लैंग्वेज को लेके काम करना है, दैट इज R1 एंड R2. सीनियर लेवल में व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 3 लैंग्वेजेस, तो उसमें भी 2 लैंग्वेज शुड बी इंडियन. One language can be from other sources. So when we are talking about R1, R2 and R3, this is R1 is the language in which literacy is first learned in the school, preferably the mother tongue. बिहार में R1, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में R1 होगा हिंदी. If you go to Assam, the R1 can be Assamese language. It should be preferably the mother tongue. Then R2 is any other language which is other than R1. And R3 is any language other than R1 and R2. And I have already told that at least 2 of these 3 languages must be native to India. वो Indian language होने चाहिए. जैसे हम लोग क्या करते हैं, कुछ कोई स्कूल में एक लैंग्वेज हिंदी है, दूसरा लैंग्वेज संस्कृत है, दोनों इंडियन है, तीसरा लैंग्वेज हो गया आपका इंग्लिश, तो R1, R2, R3 आपका पूरा हो गया. ठीक है. अगर कोई डिफरेंट रीजन में आप जाइएगा, one language may be English, another language may be Assamese, and the third language can be Sanskrit or something else. Okay, so 2 languages must be native to India. Okay. The next slide is talking about the curricular areas. उसमें क्या क्या होगा? Languages होगा, mathematical and computational or logical thinking होगा, science होगा, social science होगा, art education, interdisciplinary area, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, वोकेशनल एजुकेशन, ये सब कुछ को लेके एक करिकुलर एरिया डिजाइन करने के बारे में सोचा गया है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द पेडागोजिकल स्ट्रक्चर, तो इसमें तो एकदम काया पलट हो गया. पहले 10+2 था, अभी 5+3+3+4. तो 5+3+3+4 मतलब क्या है? 3 साल से 6 साल तक की उम्र जो एक्चुअली फॉर्मल स्कूलिंग से बाहर था, उसको अभी इंक्लूड किया गया. सो पहले का जो 5 साल, वो 3 साल की उम्र से 8 साल की उम्र तक, मतलब इसमें प्री स्कूलिंग होगा 3 साल का और 2 साल का क्लास 1 एंड 2. उसके बाद का जो 3 साल, दैट इज फ्रॉम क्लास 3, 4, 5, 6 तक का. Then 3 year is from class 6 to 8, and ultimate the 4 years, that is the secondary level. Forget about the higher secondary level. पहले होता था senior secondary, higher secondary. Now 4 years from class 9 to 12, 4 years is in the secondary level. तो pedagogical structure में क्या देख रहे हैं? Fundamental, preparatory, middle and secondary. I repeat,
the four different layers starting from the lowermost structure is the fundamental, the preparatory, the middle, and the secondary. This is the new academic structure. What are the learning standards? Now, again, we will start from the bottom and gradually we will move towards up. So, the foundational stage, the first 5 years, that is preschooling, Anganwadi or pre-primary of 3 years from ages 3 to 6, and then 2 years from age 6 to 8, that is class 1 and 2. It should be multi-level and play or activity based learning. तो फिर से बोल रहा है, हम लोग जब पेडागोजी का चर्चा करेंगे फिर से हम लोग दोहराएंगे कि प्ले बेस्ड लर्निंग मतलब क्या है। छोटा बच्चा हम लोग घर में भी देखते हैं या तो और के घर में भी जब छोटा बच्चा देखते हैं, देखिएगा छोटा छोटा बच्चा कुछ भी उठा के पहले मुंह में डालते हैं, because they perceive about the environment, about their surroundings only through their senses. और सबसे ज्यादा strong sense उसके मुंह में होते हैं, उसके टांग में होता है. They try to get the taste of anything and to know better about it. That's why जो भी मिलेगा उसको पहले मुंह में डालते हैं, उसको छू के देखते हैं, उसको आंख से देखते हैं, उसको कान से सुनते हैं, ये बाद में आता है. But remember that in the foundational stage, all these children gradually from 3 years of age to 8 years of age, actually they get knowledge about the surroundings, about this world around them through their senses only. तो फिलोसॉफिकल बात उन लोगों के साथ बोलने से कुछ वो लोग के पले ही नहीं पड़ेगा. So whenever you are talking about their pedagogy, you have to make them learn through playway activity where they can actually apply their senses and get knowledge through their senses. Then comes the preparatory stage. इसमें भी आपका प्लेवे मेथड चलेगा, उसके साथ डिस्कवरी मीन्स एक्टिविटी जिसके थ्रू कुछ एक्सपेरिमेंटेशन हो रहा है एंड दे डिस्कवर्ड समथिंग न्यू और गुड फॉर देम and they learn by that. That is the preparatory stage type of pedagogy. It should be activity based, it should be interactive classroom learning. Then you go to the middle stage, that is from the age 8 to 11, class 3 to 5. इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करेंगे. एक्चुअली एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो शुरू से अंत तक चलेगा, because when the students are not engaged, if they don't experiment and then they do not reflect back on their activity, they can never learn properly. तो मिडिल स्टेज में और ज्यादा करके हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में बोलेंगे इन साइंसेस, मैथ्स, आर्ट, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज. And then the last level of schooling, the topmost 4 years level, that is the secondary stage, these will incorporate multidisciplinary study, critical thinking, and flexibility will be there in the choice of subjects. Okay. Okay. Foundational stage 3 to 8 years. What are the domains? What will be the ways of physical development? What is the socio-emotional and ethical development? We'll talk about that. But then when we were talking about the holistic development of children, we have to understand that this development is a gradual process. धीरे धीरे होता है, बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है. एक ही साथ एक साल में बच्चा का पूरा डेवलपमेंट हो गया, मेंटल डेवलपमेंट एक बार में हो गया, फिजिकल डेवलपमेंट एक बार में हो गया, ऐसा नहीं होता है. दिस डेवलपमेंट इज ग्रेजुअल एंड समटाइम्स ओवरलैपिंग. ठीक है, जो फाउंडेशनल डेवलपमेंट है उसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्ट्रक्चर में, नेक्स्ट वाला स्लैब में जब बच्चा जाता है, उसका डेवलपमेंट चलता रहता है. उसका फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, ये सब कुछ चलता रहता है. सो आवर पेडागोजी विल बी
taking care of these things. Key, this development is gradual. Sometimes there is some common elements between the different slabs, and sometimes there is overlapping also. Sorry. Then I am after foundational stage there is preparatory stage from 8 to 11 years. इसमें भी दो ही लैंग्वेज का फॉर्मूला चलेगा, R1 and R2. इसमें मैथमेटिक्स एजुकेशन आएगा, आर्ट एजुकेशन आएगा, physical education, world around us, which we call as EVS, then work and pre-vocational skill. All this comes under the curriculum structure of the preparatory stage. And when we talk about the middle stage, that is from 11 to 14 years, इसमें अभी R1 R2 से काम नहीं चलेगा. There comes the third language, R1 R2 and R3. हम लोग के स्कूल में जो फॉर्मूला है वो क्या है? जो क्लास 5 तक जो है आप R1 and R2 से ही काम करते हो. That is, one is the native language, the mother tongue, that is the Hindi, and one foreign language, that is English. English actually आजकल अब foreign language नहीं है for most of the Indians. It has also become an Indian language because it is a common medium of interaction. Okay. Now, when we are talking about three languages in the middle stage or in the secondary stage, R1, R2, R3, इसमें दो लैंग्वेज इंडियन ओरिजिन का होना चाहिए और एक लैंग्वेज फॉरेन ओरिजिन का हो सकता है. इसमें भी मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट एजुकेशन, इंटरडिसिप्लिनरी एरियाज, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, वोकेशनल एजुकेशन, असेसमेंट, ये सारा कुछ इसके करिकुलम स्ट्रक्चर में हो सकता है. Now, what are the 5 key goals of NCF? गोल क्या है? ये जो इतना कुछ काम हम लोग करेंगे, इतना सोचेंगे, इसके पीछे गोल क्या है? पहला तो बोले कि when we are talking about holistic development, we have to think about the academic, emotional, physical, and social development, well-being, positivity of all the children. Help students develop intellectual quotient by providing them opportunities of experimentation, of discovery at their level, to create a curriculum that promotes quality teaching learning process, to foster creative thinking skills by facilitating different activities, and to provide students with the liberty to express individual thought. ये 5 की गोल है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क का. Okay. The next thing is actually the different domains, you can tell. What are the biological processes? What are the socio-emotional processes? What are the cognitive processes which will work together here in this NCF? And what is that overlapped area? What about the biological process? Biological process kya hai? These are the genetic and epigenetic factor and material conditions which have an impact on a child's body, such as traits inherited from parents, development of brain, development of height, development of weight. ये आते हैं, it comes under the domain of biological process. Socio-emotional process क्या है? इसमें we are talking about the changes in the individual's social relationship, change in the emotion, change in the personality. These comes under the socio-emotional process, and cognitive process is the thinking process, the intelligence, the language, the communication that comes under the cognitive process. Now, when we are talking about the holistic development of the children, all these three processes must overlap so that there is holistic development. Only biological development, only socio-emotional development, or only cognitive development will not be sufficient, will not actually contribute to the holistic growth and development of the children. And that is why we have already discussed about the Panchakosha theory. ये क्या है? ये प्राचीन जो उपनिषद है उसमें
तैत्तरीय उपनिषद में हम लोग के जो कोई भी ह्यूमन बीइंग उनके बारे में बोलते हैं कि ये सिर्फ मन नहीं है, ये सिर्फ शरीर नहीं है, ये सिर्फ बुद्धि नहीं है, ये सिर्फ चिंता नहीं है, सब कुछ को मिलके भी इससे परे कुछ है जो ह्यूमन बीइंग है। तो जब when we are talking about the Panchakosha Vikas, the five-fold development from Taittiriya Upanishad, so we talk about the physical layer of human being, that is the Annamaya Kosh. We talk about the life force energy layer, which is the Pranmaya Kosh. We talk about the mind, that is the Manomaya Kosh. We talk about the intellect, that is the Vigyanmaya Kosh, and we talk about the inner self, the soul, that is the Anandmaya Kosh. So, our curriculum framework should be such that all these five layers can be developed to make a perfect human being. Not only the physics is important, not only the mind is important, not only the intellect is important, everything is important for the perfect development, for the holistic development of the human being. And while making our curriculum, or while making our lesson plan, or while talking about the teaching learning aid or different engaging activities, we have to think about this. This is a sweet slide about the foundational stage in the NCF, which shows how the classroom will be organized. You can see that there is no formal setup. The teacher is also sitting happily. She is actually smiling with the students. The children are eager enough to interact with each other and with the teacher, and they happily are looking at different pictures. They are discussing about themselves. They are discussing about different things which are there in their books or out of their books. So again, teachers, when we are thinking, when we have to look back, and every time I'm reiterating that when we are talking about development, that we are going to think about the physical development, the socio-emotional and ethical development, the cognitive development, and of course, the language literacy development, aesthetic and cultural development. ये सारा development necessary है. So when you are thinking about activity, you think about the physical development, you think about the emotional development, you think about the socio-emotional and ethical development, and of course you think about the cognitive development of the children. Okay, so when we are talking about this, what we mean to say, I have already told that when we are planning for teaching, teaching is a deliberate act carried out with the intention of bringing about learning in children. I have told that in a teaching plan, there will be components like competency, learning outcome, lesson objective. Then you should think about the content, the material, the teaching aids, the classroom arrangement, the specific strategy, the methods of assessment, all these should be there. But then, when we are talking about the pedagogy, before planning comes the planning for the pedagogy. कैसे पढ़ाया जाए? So, when we are talking about these different types of development at different layers or at different level, remember that, sorry, the pedagogical consideration should also be according to the physical development, according to the emotional development. जैसे एकदम छोटे बच्चा का जैसे फिजिकल डेवलपमेंट होता है, और उसके बाद वो बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है, उसका फिजिकल डेवलपमेंट में या ग्रोथ में थोड़ा सा स्पीड में रिडक्शन आता है। फिर जाके जब बच्चा 10 साल से ज्यादा हो जाता है, अचानक वो थोड़ा सा उसका हाइट गेन हो जाता है, वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, उसका वॉइस चेंज हो जाता है। तो ये सारा कुछ याद रखना पड़ेगा। उसके साथ उसका इमोशनल नीड भी याद रखना पड़ेगा। छोटा बच्चा जब घर छोड़ के, मम्मी को छोड़ के स्कूल में आता है, वो बहुत रोता है, बिकॉज उसका इमोशनल नीड
इमोशनली ही और शी इज सो अटैच टू द मदर दैट उसके लिए और किसी के ऊपर भरोसा करना मुश्किल है। तो आपके जो प्री प्राइमरी का टीचर है, प्री प्राइमरी का टीचर का पेडागोजी ऐसा होना चाहिए कि पहले तो भरोसा जीतना है बच्चा का, but then the child will actually try or actually start interacting with the mother teacher. Then only the learning can take place. And the school should be a happy environment for them. For pre-primary area, when we talk about the pedagogy or lesson planning, we should think about very energetic activities, playway method, good storytelling, interacting about everyday life and beyond, interaction about healthy ways of living, interaction about whatever the children want to know. And with that, we also should think about their emotional need. बच्चा सेफ और सिक्योर महसूस करे, बच्चा अपने आप को हैप्पी महसूस करे, ये बहुत जरूरी है। उसका इमोशनल नीड थोड़ा सा चेंज हो जाता है वो जब प्रिपरेटरी लेवल से नेक्स्ट लेवल में आते हैं, क्लास 3, 4 और 5 में वो इमोशनली थोड़ा सा वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। बट देन द इमोशनल डिपेंडेंस गोज ऑन इट्स ऑन हीज और हर पियर्स। फ्रेंड्स के साथ वो इमोशनली बहुत जुड़ जाता है, किसी किसी में तो टेम्परामेंट डेवलप कर लेते हैं, वो अपना दिमाग दिखाना शुरू करते हैं, उसका प्रेफरेंसेस हो जाता है, ये पसंद है वो नहीं पसंद है, इसको पसंद है उसको पसंद नहीं करते हैं, उसके बगल में नहीं बैठेंगे। तो इमोशनल नीड का भी चेंज होता है विथ एज, विथ लेवल। देयर विल बी चेंज ऑफ फिजिकल नीड, देयर विल बी चेंज इन देयर इमोशनल नीड। उसका सोशियो एथिकल ट्रेनिंग क्या होगा, उसमें भी हम लोग को डिफरेंस लाना पड़ेगा while we are talking about planning their pedagogy. We can tell that early years of schools are very formative and crucial, and so we will talk in this foundational stage, we will talk about vibrant energies, enabling physical interactions, which engages in enjoyable stories, which uses toys, curious toys. Curious toys means toys on which, or by playing with which, the children become curious about what is there inside. Okay, so this type of curious toys, and the foundational stage pedagogy must be full body engagement with learning with their senses. And when we talk about preparatory stage, the playway method will work here. But here also, the activity should be energetic and there must be active participation in the things that students are required to do. If you go to the middle stage, there should be a good understanding of gender, of sexuality in the teachers, which will help the teachers understand their students better. Understanding families, understanding social culture, local culture by the teacher will help with understanding student behavior in the school. And when we talk about the secondary stage, where the students are still to control or still to manage their changing bodies, their changing hormonal levels, and they become self conscious, they may be trying to make sense of their maturity level, then your pedagogy should be also age appropriate and taking care of the needs and demands of the students. एंड एक्चुअली इमोशनल डेवलपमेंट को अगर हम लोग नजर में रखते हैं तो इमोशनल डेवलपमेंट के अनुसार भी हम लोग का पेडागोजी या बिहेवियर चेंज होना चाहिए, क्योंकि इमोशनल नीड जो सेकेंडरी लेवल में होता है, बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस देयर विल बी different different types of emotional need. There the teacher must be a confidente means a best friend. Okay, now we will also know a little
लिटिल बिट अबाउट पंचादी। लेसन प्लानिंग के बारे में जब इतना सारा हम लोग बोल रहे हैं तो पंचादी के बारे में जानते हैं। हम लोग के अपने इंडियन सिस्टम में जो डिफरेंट लेयर्स होना चाहिए, डिफरेंट लेवल्स होना चाहिए लेसन प्लानिंग का, डिफरेंट स्टेप्स होना चाहिए, वो क्या है? हम लोग बीएड में पढ़े हैं इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट, प्रैक्टिस, एप्लीकेशन, एक्सपांशन, असेसमेंट। तो इसको हम लोग एनसीएफ के भाषा में या इंडियन भाषा में, इंडियनाइज्ड कॉन्सेप्ट में कैसे बोलेंगे? व्हाट आर द 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस? सो द लर्निंग प्रोसेस इज, हम लोग बोलते हैं अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग एंड प्रसार। अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग एंड प्रसार। क्या है अदिति? क्या है? इंट्रोडक्शन है। फर्स्ट स्टेप, टीचर इंट्रोड्यूसेस अ न्यू कंसेप्ट बाय एस्टैब्लिशिंग अ कनेक्शन विद द चाइल्ड्स प्रायर नॉलेज। ये हम लोग बीएड की क्लास से पढ़ के आए हैं, इधर भी ऐसा ही है। द इंट्रोडक्शन प्रोसेस शुड बी गुड एनफ so that the children are curious. The children can also gather relevant information regarding the new topic. The both क्या है? Concept formation, conceptual understanding. Children there try to understand the core concept through play, inquiry, experiment, discussion, or reading in the second step. Next is abhyas, that is practice. Then prayog, that is application. Whatever knowledge, whatever theory you have understood, you have practiced, you need to apply in your real life situation. So, teachers, while we are going to plan a lesson, this application should be there. आप बच्चे को एरिया चैप्टर पढ़ाए, बहुत अच्छा से बच्चा ने जान लिया कि अगर स्क्वायर शेप का कुछ होता है, उसका एरिया लेने के लिए साइड इनटू साइड इज द फॉर्मूला। एंड अगर कुछ मतलब अलग तरह का शेप होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है बच्चा को पता है। बच्चा पूरा जो मैथमेटिक्स बुक के जो 50 साम है सारा कुछ सॉल्व कर लिया। देन व्हाट इज द एप्लीकेशन? यू कैन टेल, सी द हॉल ऑफ द स्कूल, द ऑडिटोरियम ऑफ द स्कूल, कैन यू काउंट द नंबर ऑफ टाइल्स व्हिच आर फिक्स्ड ऑन इट्स फ्लोर? अब एक टाइल का एरिया क्या है, उसका लेंथ एंड ब्रेथ देखो। इफ इट इज ऑफ स्क्वायर शेप और इफ इट इज ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, फाइंड आउट द area of one tile, and then by counting the number of tiles which is used, you can actually find out the area of the auditorium hall. तो इस तरह का रियल लाइफ एप्लीकेशन उसके लिए आपको डिजाइन करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा, सो दैट दे कैन अप्लाई देयर नॉलेज एंड दे कैन अंडरस्टैंड बेटर। एंड देन एक्सपेंशन। आपका जब हम लोग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, जो बहुत ही जरूरी है एनसीएफ के लिए भी, उसमें भी एप्लीकेशन में जाके नहीं हम लोग रुक जाते हैं। एक्सपांशन में क्या होता है? एनालिसिस होता है, कंपैरिजन होता है, क्रिएशन होता है। सो द फिफ्थ स्टेप इज अबाउट स्प्रेडिंग द एक्वायर्ड अंडरस्टैंडिंग थ्रू कन्वर्सेशंस with friends, telling each other new stories, singing new songs, reading new books together, playing new games, devise something new, and so on and so forth. So, expansion is also equally important. Now, I have already told the pedagogy will be different across stages. So, an effective approach to pedagogy in particular school stages is based on how the children will grow and learn. That is how they will grow physically, emotionally, socially, ethically, and their cognitive development. The stages are distinct, but the students' growth and maturation are part of a gradual transition with overlapping features and commonalities. So जो common factors है उसको ध्यान रखते हुए हम लोगों को अलग अलग pedagogy considering the physical development, pedagogical consideration related to emotional development, related to social development, ethical development, cognitive development, we have to take care of all of these. And while doing so,
we have to take care of the overall principles also. Okay, I try to talk about a little about these considerations. Now I will tell a little also about what will be the lesson plan structure. Okay, before doing that, also know about the non negotiable area. कुछ कुछ जगह है जो करना नहीं है, चाहे जो भी रीजन है, टीचर आपको ये करना नहीं है. Corporal punishment and fear, it's a strict no no. Whatever may be the reason, you cannot use corporal punishment and fear for dominating the child or for controlling the child. Then inequality. You can never practice inequality in the school. See, this Master X is better than Miss Y. You can never tell that. For you, all the children are equal. Rote memorization? No. This is not the age of rote memorization. I am not talking about memorization. I am talking about rote memorization, which is memorizing without understanding. That's a strict no no. And then treatment of students as passive receivers. वो जो जगमग theory है वो चलेगा नहीं. It should always be interactive. It should always be engaging. Okay. Now I was talking about the template of new template, lesson planning template, what it should be like. I have tried making one. I can only tell you what will be the things which you should take care of actually. You should take care of the resources required. क्या क्या आपको रिसोर्सेज चाहिए, क्या टीएलएम चाहिए, कौन सा टीचिंग एड चाहिए, ये पहले से आप तय करके रखिए. Then you should also write and spell out the learning objectives, the general learning objectives and the specific learning objectives and learning outcomes as per the NCF's manual. That is called SMART. आपका लर्निंग आउटकम शुड बी स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड. आपका लर्निंग आउटकम मतलब हफ्ता ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद क्या क्या बच्चा मिनिमम जान जाएगा वो आपको लिखना पड़ेगा. इट शुड बी मेजरेबल ऑल्सो, इट शुड बी रियलिस्टिक ऑल्सो. Then you have to know the key competency. क्या क्या competency के ऊपर आप activity design करोगे, whether it is on collaboration, whether it is communication, whether it is social responsibility or creativity or emotional development, you have to spell out. हर एक लेसन के लिए हर एक कंपिटेंस आप हाईलाइट नहीं कर सकते हो. किसी के लिए आप कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा काम करोगे, किसी में आप क्रिएटिविटी के ऊपर ज्यादा काम करोगे. बट इट शुड बी क्लियर फॉर द टीचर एंड फॉर द स्टूडेंट कि इस मतलब इस चैप्टर में या तो इस टॉपिक में जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो कौन कौन सा कंपिटेंस इज एक्सपेक्टेड, कौन कौन सा लर्निंग आउटकम इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम अस. While writing your lesson plan, please highlight or write the targeted MI skill, multiple intelligence skill. आप किस किस मल्टीपल इंटेलिजेंस स्किल को आप छू रहे हो, आप टच कर रहे हो, उसको आपको जानना चाहिए. क्या आप लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हो, क्या आप लॉजिकल इंटेलिजेंस के ऊपर काम कर रहे हो, क्या आप म्यूजिकल इंटेलिजेंस के ऊपर कुछ एक्टिविटी करा रहे हो. This should be very, very much clear for the teachers. What are the transdisciplinary activities? You can suppose you have taught them something on social science. After that, you can tell that you serve the date, you take care of these links, know more about these things, and then you make a PowerPoint presentation on this topic. What is this? This is also a transdisciplinary activity. So whether you are going to go to other subjects and read something from there, whether there will be visual arts, whether there is performing arts, whether you are going to tell the child about a poster making, about a slogan writing, or you are going to tell them to make a PowerPoint presentation, that is your choice.
But then you need to take care of all these in your lesson plan. Okay, and what will be the way you are going to impart your lesson, that is what will be your pedagogical preference. Because after all, education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. तो कल के लिए हम लोग के बच्चा को, हम लोग के नेशन को प्रिपेयर करने का बहुत बड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग के ऊपर है. इफ the time permits in future, I am going to share with you the template which I am working on. 75% of it is prepared. If there is time, I will share it with you so that you can also practice to write a nice lesson plan, and you talk about the pedagogy of the new age following the NCF. That's all from my side. In 1 hour time, this is not, this cannot be completed, but I tried my best to tell about whatever I know. And in future, in close future, I know that we'll be sharing all our thoughts and all our resources together so that the teachers make better use of their time and make better lesson plan and implement NCF in its true form. Thank you. Thank you, Rama ma'am. Dear participants, if you have any query, please put in your question in chat box. I think they all are in holy mood. Yeah. Okay. But today's topic is so important. That's why I am thinking that participants will listen very carefully, ma'am. They should also. And it is required by all of us. Any question, please? Ma'am, I think that There is no any it's query. there's no query, or they are not interested. They are busy going to their home, or they're busy in other things. Okay, but yes, Okay, thank you. Thank you thank so you. much Thank on you. behalf Thank you. from entire team member of Aryavat Sahodaya and all the participants. I thank you, Rama ma'am, once again for wonderful session, and I can say very important session, ma'am. Very important session. It That's true. really it's a very vast topic, Mm. and we should go for a offline training Yes. surely. Yes, 5 we घंटे should का have to ट्रेनिंग plan चाहिए for इसके in लिए, वर्कशॉप. yeah. ट्रेनिंग नहीं, वर्कशॉप होना Yes, चाहिए. so we will talk to our seniors Yes. so that हम लोग नए सेशन में हाँ. इसको हम लोग ऑफलाइन में कंडक्ट करा सके, और आप जो टेम्पलेट पे काम कर रहे हैं हम उसको भी देख पाए, तो ऐसे ही हम लोग बात करेंगे. आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू मैम कि आज ऐसे बिजी शेड्यूल में आपने हम सभी लोगों को टाइम दिया और इतने अच्छे से इतने वास्ट टॉपिक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो मच मैम. और वंस अगेन थैंक यू ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू here to be here. Thank you, and सबको एडवांस में हैप्पी होली रमा मैम. हैप्पी होली आप सबों को भी. Thank you so much ma'am. Now you can leave Okay, ma'am. I can leave, huh? Thank Yeah, thank you so much ma'am. And dear participants, already link has been shared in the chat box. Please fill it with correct name and correct school name and school code. I hope you all have filled the attendance link. Please do it by 6:15 p.m. And in advance, I wish you all happy Holi. Thank you so much.